इतने सवाल पूछे प्रणिल ना, आई वाज लाइक इतने सवाल होते भी है. आपका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है. It was a process of 300 plus people. कैसे इंडियन कंपनीज बाहर जा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं? Little pressure is not there, then I don't think आप परफॉर्म कर पाओगे. कैसे आप हैंडल करते हो? ये प्रोसेस कितनी कॉम्प्लेक्स है? पार्ट पेमेंट, 100% पेमेंट उसके होम अकाउंट में नहीं जाएगा. 50 इधर जाएगा, 50 उधर जाएगा. One of the most important documents. Without this, you won't be able to proceed further. When you have clarity, you don't need to worry about the skill set, the education, the background you have. आज के एपिसोड में मिस्टर ध्रुव, जिनका 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने लिटरली कॉल सेंटर से शुरू करके एक अच्छे कंपनी में ग्लोबल मोबिलिटी लीडर के तौर पे काम शुरू किया है, इनसे हमने यही चीजें सीखी है, यही चीजें जानी है कि आपको हर हार्ड डिसीजन से कुछ बेनिफिट्स ही होता है. यू कैन आइदर डू समथिंग बेटर और यू विल गेट टू लर्न समथिंग बेटर फॉर श्योर. आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके फैंसी नंबर्स मैटर नहीं करेंगे तभी. इस एपिसोड में मैंने पर्सनली बहुत चीजें ऐसी सीखी जो मैंने कभी सुने भी नहीं थे. आपको भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल होने वाली है. बट बिफोर वी जंप इनटू द एपिसोड, आई वुड लाइक टू अपील ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद समवन हु इज इन नीड. और ऐसे एचआर्स के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है जो एचआर्स में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं या नई चीज़ें जानना चाहते हैं. ये इनिशिएटिव जॉब मार्केट बेहतर बनाने के लिए हमने डेडिकेट किया है. सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट. ऑल्सो शेयर दिस विद समवन, एज आई सेड, हु इज इन नीड. And now, before any further delays, let's welcome Mr. Dhruv, aka Mr. Dhruv Jyoti. I would like to quickly take your consent on this particular video. ये हम लोग LinkedIn, YouTube और अलग अलग सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे with the reason to help people, educate them and share your knowledge with someone who's in need. Sure, yes, you have my consent. Thank you so much, Dhruv. Before moving ahead, आपका 16 years का experience है. You literally started from a call center and now being Yeah. an expert in this field. हमें सबको ये जानना है कि क्या हुआ था ग्रेजुएशन में, कैसे आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में आए हो और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हुआ है फॉर द लास्ट 16 years. So I've started with हम्म. right after my graduation, हम्म. and it was a BPO experience. There was like 2.5 years experience. After that, I got this opportunity moving to also. हम्म. But from there, it was because of the location and some challenges. Staying in Chennai, especially the culture problem and some other issues that I हम्म. thought I'll just switch back to Calcutta हम्म. if I can get an opportunity. But then yeah, it didn't work. So I had to put down my papers. हम्म. And then I got this opportunity of working in a small company in Calcutta only. That was again a BPO, but while working there only, I got this opportunity. That was, as I said, like a gift to me. हम्म. By God's grace, I got it. And someone that I have known has referred me to. Since Okay. then, I've started working. That was in operations that I हम्म. started. Initial days were like pretty good. It was a pilot batch. I started working with new people, though few experienced people, much experience. My manager, he was asked to move from Mumbai to Bangalore to start with that new process. And yeah, working there, it was a lot of learning because हम्म. it was a process of 300 plus people Oh. and managing like the teams and 300 plus people. And also, Pranal, I would say it was divided into teams like हम्म. 15 or 18 odd teams. So I had to support the teams, like coaching them and quality and sharing the feedback, sharing the process update with the teams, with the team managers, and also with the leadership team. And then what is the status, running the scores, also what is the progress. There was some project also going at that point हम्म. of time to improve the process scores for each and every team. The team, especially who are like repeated offenders, हम्म. outliers for multiple months, we had to work towards them, especially coach them and all the stuff. So it was a good learning at that point of time. But then, yeah, I was not managing any team. हम्म. But then, yeah, later on, I got an opportunity to move to HR. This is a new move. There was nothing.
that I had planned for the HR, Mm-hmm. but it was something again, maybe God's grace. I was lucky enough to got this opportunity from the same Wow. manager because he moved in the same role where he had this opportunity and again a pilot batch where Mm-hmm. he asked me if I'm interested or not. So I joined, I took that opportunity. That was a different experience, learning experience, working experience. There I got to see how you manage the stakeholders, internal and external stakeholders, Mm-hmm. people that we are supporting. It's a bank, right? As you know, so we have got like people who are the customers, and also people who are planning to hire to help them and supporting the recruitment, creating the requisition, everything that is required for that requisition. In fact, I have also supported a diversity drives like during the weekend, especially a lot of my Monday to Friday work schedule that was over and above my BAU at that point of Wow. time, just to gain some more knowledge what exactly diversity drives are. Mm-hmm. Those are solely for women employees. We used to come. There was like walk-ins. We used to Wow. put out the job ads at that point of time. And then I used to go there, support the hiring managers at that point of time, especially the Mm-hmm. interview panels. 4, 5 people or 6 people coming from a different domain altogether. Suppose from asset management, people are coming in and seeking help from the recruitment side. So at that point of time, they used to ask me, Dhruv, if you're available, if you're free, then we have this particular work. If you can just join us and help us. Yeah, definitely. This is a learning opportunity again because I'm Mm-hmm. not from HR. So I would like to learn and take some notes for myself. Maybe later I can use it for a Mm-hmm. different role to move up the ladder. So that was again a first-hand experience for me, Pranil, doing that, managing different kind of projects. As I mentioned, I have, I mean, by the time I got the experience, 2 years, 3 years, I have been handed few people like a quality coach or someone who's senior to them who are joining the new team, especially during the pandemic while working from home. It was completely virtual at that point of time, Mm. right? People used to come join the team and they used to come to me. The first thing Right. was that in them. That was again a new experience. Training Mm-hmm. people, creating the job aids, SOPs, share with them, taking them through each and everything, sharing the completion report, updates with the management that हाँ भाई यहाँ तक हुआ है and I think this person is ready to go, or someone who is not up to the mark at that point of time. Mm. We used to ask for some extra time from the management stating हाँ sir थोड़ा और time चाहिए इसको, maybe 1 more week and then we can do some side by side. So that is another experience. Mm. Supporting international or US stakeholders solely, as I said, work with higher management leadership, I would say VP and ED kind of people, supporting US interns at one point of time was hiring. That process has been closed as of now as we speak. Um, but then it was like a fun process, interesting process, and that was Mm. also completely new where they used to hire, fresh MBA graduates for Mm. their projects, especially solely for internships. Maybe 2 months, 3 months, they will be there based on their Mm. process or performance, Right. majorly. Would be retained back by the company, and that's completely on the hiring manager also. So we used to Okay. support them with their relocation. That's a part of the global mobility, as I mentioned. And Mm-hmm. then after long, good 9.5 years in when I got this opportunity, Mm-hmm. that is again global mobility as a team leader, and that Okay. is solely for a client. Global Mm-hmm. mobility was in-house, but here the difference is for a client. So each and everything, like end to end, you have to do it for the client. Okay. So far, so good Mm-hmm. experiences, different kind of experiences. Mm. I would say individual contributor it was there, but then yeah, moving to a team lead role, it has got different kind of challenges. It's not just you, but then it's your 10 or 15 odd people who are like equally different from each other, has got different issues every time, issues within the team also, like conflict, especially new kids. I've seen people are coming just like freshly out of college. Mm. Now I could relate to my days also. Right. So I've got similar kind of issues. Not able to understand and not able to cope up at some point of time. थोड़ा Mm-hmm. गुस्सा हो जाना है and heartbreak हो जाता है कि हाँ ऐसे कैसे बोल दिया and also I see these days, friendly to be honest, and nothing against anyone, but then yeah, I see people थोड़ा सा भी if you put them under pressure, right? Because Yes. work has to happen. If little pressure is not there, then I don't think आप perform कर पाओगे.
Right, right, So right. if there is little pressure, people will come up saying that, yeah, I'm mentally stressed, my mental health balance is getting impacted. I said, okay, it's going to a different angle altogether. So this is what I've seen now. Yeah, So okay, far, so good. A lot of nice. learning. But what I understood from your journey is like you went with the flow and you have taken all the challenges which were possible, like getting into pilot Yes. projects, getting into new trainings, getting into new set of like DI hiring, inclusion of women Mhm. hiring, everything. And Yeah, this is like all the stressful situations that you have already gone through because you are completely aware. Nowadays, people are more keen about having a particular degree before starting in that yeah, particular domain, right? Like correct. people who are having MBA HRs will come to the HR and then they will explore different True. things. Get a You are degree and then start with that. exactly. So I can completely relate to it that how difficult it was for you. But while saying that, when you reach to your current role, right, which Yeah, is global mobility team leader, right? mobility. Yeah, We would like to know more about this. Like, what is global mobility at a first place, and sure. what are your responsibilities in uh, how you're helping people to get along with the organizations or maybe with the different clients, I would say. Yeah. So global mobility is something like, suppose I'll give you an example. Yeah. Pranil is working in India, but company wants Pranil to be relocated to US. So Hmm. each and everything for Pranil would be taken care of by Hmm. the global mobility team. As Hmm. simple as that. Hmm. So that starts with your relocation. Suppose it's a first thing is the assignment. What kind of assignment you would be sent to? Hmm. That's a decision from the business again. So लोग को चाहिए होगा maybe a short term assignment, long term assignment, whatever Hmm. the business requirement is. Based Hmm. on that, the detail will come to us. So Hmm. this is the start date. Suppose August 1st, we are planning to send Pranil on a long term assignment to US or any other country. We would ask you to initiate the process. So it takes a lot of time that involves. Like the first thing is the immigration part, right? As you can Hmm. see, immigration itself takes, if it's in US Pranil, then it's like 6 months at least at this point of time, because the vendor that we have who's supporting with the immigration part, it takes nothing less than 5 to 6 months, and that's what they have said. So if you have to initiate a process, you should start way before the assignment start date, because Right. that's when we are not getting the opportunity or option only to get a Hmm. visa appointment to the visa office. So forget about the start date. Doesn't look like Hmm. sensible or realistic start date. Right. Then you have to make sure the employee is comfortable in that particular role, because it's a new place altogether for that particular employee, leaving Hmm. everything. Hmm. It's Hmm. not just a city, it's a country, and everything is different. The culture, food, the office, the people in that office, if he or she is going to like that place or not, if he or she is going to perform in that particular country, considering the culture, the people, the language that they have been using. Hmm. So each and everything needs to be considered and taken care of. Just talk to that particular person, initiate a call with that guy, let them know that we are there like end to end. I'm the POC, Hmm. who is going to manage your assignment from now onwards till you end the assignment. और ये चलेगा for the time the assignment has been scheduled for, like for 2 years, 3 years. Oh. Like a soft call or an email just to let the person know. It's more like a human interaction, Pranil, has to happen. Hmm. It's not like a tick in the box or robot जैसा email डाल दिया या chat पे कुछ hi hello भेज दिया. Not, you can do that the moment you have. Suppose I have a good rapport with Pranil. I'm Hmm. I'm managing Pranil's assignment, Hmm. and I have spoken to Pranil. एक साल हो गया and all that stuff. Pranil is doing really good in that assignment. हाँ, छोटा मोटा conversation in the email, or Pranil is pretty much aware of my timings, and we can initiate a conversation via Right. chat. That is fine. But initially, what we prefer is talk to that person, keep them warm, let them know what Hmm. exactly is happening, because they have no idea उसके background में क्या चल रहा है. We Right. know कि इसके relocation में क्या चल रहा है, इसकी immigration में क्या पंगे हैं. Hmm. 100 issues आते हैं from the department, from the government side, कि ये चीज चाहिए, ये चीज Immigrations, चाहिए, भर reason के to डॉक्यूमेंट्स चाहिए. join. Yeah, yeah, करेक्ट. everything. फिर रिलोकेशन में उसको ये एरिया में नहीं मिल रहा है, उस एरिया में नहीं मिल रहा है. वेंडर इज इन्वॉल्व. वेंडर इज Hmm. सेइंग कि सपोज वेंडर का बजट दिया हम लोगों ने $1,000. वेंडर इज Hmm. सेइंग कि यहाँ ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे पॉइंट है,
पॉइंट ए के आसपास इतने रेडियस में, 10-20 किलोमीटर के रेडियस में, $1,000 में आपको घर नहीं मिलने वाला है, वहां पे $2,000 है। राइट। आप जाके कम से कम और 10-20 किलोमीटर दूर जाके देखो, एम्प्लॉय इज नॉट ओके विद दैट। तो या। मैं क्यों इतना ट्रेवल करूं? It's not my responsibility. हम्म। You find a house for me, हम्म। or else I'll not go for the assignment. सिंपल। तो सिंपल इज दैट। तो इस हिसाब से वी हैव टू कन्विंस द वेंडर ऑल्सो कि भाई थोड़ा और देखो, हम्म। बिकॉज यू आर लोकली बेस्ड आउट ऑफ दैट कंट्री, यू नो द प्लेसेस वे यस। बेटर देन अस। हम लोग यहाँ पे बैठ के मैप देख के दो चार चीजें बोल सकते हैं, बट देन वी डोंट नो द प्राइस। सब कुछ एग्जैक्टली। आपके हाथ में, अब देखो अकॉर्डिंगली वी कैन गेट ऑन अ कॉल विद द एम्प्लॉय, विद द हम्म। वेंडर and with the hiring manager also, or maybe the HR who are involved in this particular assignment, and we can come to a conclusion ki ha chalo this thing looks good for him, हम्म। he can start with that. स्पाउस अगर जा रहा है या फिर एनीवन हु इज सपोज प्रणील इज मैरिड एंड किड्स, सो उसका सबसे पहला क्वेश्चन होएगा कि बच्चों का स्कूलिंग, कोई कोई चाहता है इंटरनेशनल स्कूलिंग, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए इन दैट कंट्री। राइट। एग्जैक्टली, मेरा हक बनता है ना, आप मेरे को भेज रहे हो, मैं अपने बच्चों को राइट। लेके जा रहा हूँ, मेरा बच्चे का पढ़ाई बीच में स्टॉप हो जाएगा, डू आई हैव दैट ऑप्शन, विल द कंपनी सपोर्ट मी? और अगर एग्जीक्यूटिव लेवल में होता है देन दे विल आस्क यू फॉर लिस्ट ऑफ स्कूल्स आल्सो, और व्हाट इज द बजट दैट वी ऑफर for their kids education, especially for international. राइट। Recently ऐसे चीज हुआ था, one guy was like, इतने सवाल पूछे प्रणिल ना, I was like, इतने सवाल होते भी है सर, थोड़ा टाइम दे दो, I'll get the information, I'll write back to you. He's saying I understand I'm asking so many questions, it's too early for me. उसका 6 महीने बाकी था हाँ। assignment start होने में, but then he started because he had a bad experience ओ। in a different country altogether. So राइट। he just want to mitigate that kind of risk, especially his school kids. And it was in Singapore or something. And हम्म। Singapore is freaking expensive, Pranil. That's what he said. You could see the price. It's too expensive. It's really not possible for me to pay for my two kids and then get them international education. राइट। So please get that thing sorted for me and let me know what is the amount that a company is offering, what is the uh, budget that they have for my kids international school. तो हम लोगों ने वो अप्रूवल लिया कुछ कुछ केसेस में। here also we get the approvals if it's not even there because it's a structured policy based हम्म। on the assignment। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, लॉन्ग टर्म होएगा उसके एक लिस्ट ऑफ पॉलिसीज रहेगा, शॉर्ट टर्म होएगा उसके कम रहेगा, राइट। सिंपल एज दैट। लेकिन कभी कभी वो मांगता है, बेस्ड ऑन दैट वी रीच आउट टू द बिजनेस सीओईज स्पेशली, center of excellence. So हम्म। they get the approval. Once we get the approval from them, then only we can proceed. So ओके। these are the things that needs to be taken care of. And one most important part is the payroll. So राइट। 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 पेरोल उसकी इज। सैलरी में अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ, then that's a big problem. There is a lot of escalation. They reach out to the COEs or even higher level to escalate कि मेरे इस महीने का पैसा सही से नहीं दिख रहा है. Send me a clarification or हम्म। explain it to me. How did you calculate? Do they come to you for the same issues or do they go to another people in Salary. HR So team? if it's an expat assignment, Pranil, everything is us. ओके। Everything. उसको घर चाहिए, घर के लिए कोटेशन भेजो, हम्म। कौन से एरिया में अच्छा होगा, कैब चाहिए, कैब का बेनिफिट्स है कि नहीं, आई टेक अ कैब, आई डू आई गेट अ रीएम्बर्समेंट, इनवॉइस को भेज ओ। देते हैं हर महीने। बच्चे के स्कूल फीस का जो इनवॉइस होता है, फीस भरा है $1,000 $2,000 वॉट एवर, हम्म। एनुअली क्वार्टरली, विल शेयर द फीस वाओ। receipt and ask us to proceed. So ओके। there is also here in this client wala environment, what we have seen is key. There is a request also at times where they will ask for a part payment, like 100% payment उसके home account में नहीं जाएगा, ओ। 50 इधर जाएगा 50 उधर जाएगा। जैसे कि Pranil is requesting me 50% of salary should go to his India bank account, 50% should go to his US bank account. ओ। For what reason we don't know, but then yeah, we are supposed to do that also. अच्छा, ये भी करना पड़ता ये भी करना पड़ता है, आई मीन उसके फिनेंसिस के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी हैव टू डू दैट। है। एंड सो यू हैव टू रिक्वेस्ट द आल्सो पेरोल बैलेंस द अकॉर्डिंगली। टैक्सेशन एंड ऑल। करेक्ट। दिस इज होम सो क्रिटिकल। टैक्सेशन, क्योंकि उसका टैक्सेशन, आई वाज अबाउट टू कम एंड देन टॉक अबाउट द टैक्सेशन पार्ट आल्सो, सो हम्म। टैक्स ब्रीफिंग आल्सो, home and host tax briefing. The home tax briefing is the most important part. Without that, you won't be able to create the cost estimate that is going to be shared, or the assignment letter, or anything with the expat assignee who is going for ओके। that assignment. So that again gets done by the vendor. उसको कॉल पे लेते हैं, जूम या टीम्स कॉल पे जाएगा, he हम्म। has to be available, उसको पूरा का पूरा डेटा समझाया जाता है, दिस इज द ओके। परसेंटेज
this is the amount that you would be getting and all those stuff. Based on that, एक engine बोल के आता है, like a tax engine. We get it after the tax briefing call we receive from the vendors. Based on that, उसका tell me more about it. Like tax engine, you said, right? sure. What is that? It's a tax engine that gets generated by the vendor Hmm. while they are doing the tax briefing. This is for home and host location both. Okay. तो दो कॉल्स रहेगा. सपोज प्रणील इज गोइंग ऑन असाइनमेंट इंडिया से यूएस. Hmm. इंडिया में एक ब्रीफिंग होएगा टैक्स का आपका, और यूएस में एक होएगा. Okay. So two tax briefings. After that, the briefing is done. They'll create the tax engine. They'll share with us, with the global mobility Oh. team. They will use that engine to create the cost estimate. This is Okay. one of the most important document. Without this, you won't be able to proceed further. और बिना Oh. सैलरी उसको शेयर करके आप उसको बोल भी नहीं सकते कि भाई तुझे असाइनमेंट स्टार्ट कर रहा है. He would not agree. But this और happens only when you are sending someone from one country to another, right? For like two, correct. 3 years of visit. Yeah, anything. Even it's for 6 months also, right? The Hmm. smallest assignment that we have, Pranil, is for 3 to 6 months. Okay. तो उसके लिए भी that is mostly for training, I would say. But 6 महीने के लिए भी अगर वो जा रहा है बंदा किसी काम के लिए भी, even for training, there is also this tax engine is required. Without that, nothing can be done. That's Oh. the primary and most important document and global mobility because it's an expat that is going. So based on that only उसका cost estimate बनेगा, उसका उसका assignment letter बनेगा Hmm, hmm, जो hmm, है. hmm. क्योंकि वो देखने के बाद ही उसको सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ भाई मेरे को इसके लिए ये बेनिफिट मिल रहा है. वो सारे रिव्यू करेंगे. अ, फिर एचआर रिव्यू करेंगे. And then they will sign and then they'll send it back to us so that we can share it with the employee. और ये सारे calls पे होता है actually, like Oh. schedule a call, Zoom call or a Teams call, and you take the employee on that call, explaining each and every benefit of their assignment. And So this is you must have the consent from the employees on everything, like every document, every calls, right? That they have a yes. clarity about it. Yes, I mean if there is any hiccup from the employees end, जैसे कि आप मेरे को कुछ समझा रहे हो या फिर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया ना, we have to park it there, take it back, and get it clarified, and then come back again to the employee just to make sure कि हाँ भाई हम लोगों ने भी समझा और आपको भी समझा रहे हैं, so that there Oh. is no ambiguity, no doubt before they could start, because that could also trigger an escalation. Hmm. That's what we have seen. A lot of escalations because it's the client, client side employees are not able to understand or not happy the way the services are being delivered. Hmm. So they need more attention, more clarity, more personal or human touch, not just dropping an email. That's why I mentioned not just dropping an email or a chat, but then yeah, call Right. them, keep them warm, let them know ki we are there. You can reach out to us for anything that you may have Hmm. for your assignment. So Wow. it's like end to end. लेकिन now This is a different world of HR, I would say. And this is pretty niche. If yes, you yes, remember, I yes. was talking about this particular role. This is pretty niche. हाँ, बहुत कम कंपनी में ये होता है. जहाँ पे हो Exactly. रहा है, वहाँ पे you have to have people who has this particular knowledge only. You should hire. कोई गलत Hmm. बंदे उठा लेंगे तो ये प्रॉब्लम होएगा, which we have also seen. राइट राइट. बट अभी ऐसे ऐसे भी कभी होता है क्या कि नाउ यू हैव गिवन अ क्लैरिटी टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, एंटायर थिंग, Hmm. यू हैव द Yeah. कॉन्सेंट, एवरीथिंग इज देयर, ओके, सब Yeah. कुछ समझाया गया है, बट स्टिल एस्केलेशन कम्स व्हेन द पर्सन गोज देयर एंड ही गेट्स टू अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज समथिंग दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ, और अभी मेरे Correct. लिए प्रॉब्लम हो रहा है. एनी पर्टिकुलर सिचुएशंस दैट यू केम अक्रॉस लाइक दैट? Yeah, I mean multiple situations and coming, I mean answering to your question, escalations आते हैं कि नहीं, 100% आते हैं. As I said, there are like n number of reasons that we हम्म. do not have any clue about. आगे जाके क्या होने वाला है? We have created everything in even before the assignment could start. Just like an example, Pranil is going on assignment on August 1st or maybe September 1st. हम्म. So for some XYZ reason, for immigration or something or the other, assignment could not be started on August 1st, the हम्म. planned date. It has to be moved to September 1st or October 1st. राइट. More realistic start date. Okay. तो वहीं पे first thing is a dissatisfaction. अरे मेरा assignment पीछे क्यों हो रहा है? That is an escalation. हम्म. क्यों? आप लोगों ने पहले से शुरू नहीं किया. मेरे को पहले ही बोल देता. I could have shared my documents. You waited for it. Why? So a lot of back and forth running.
एंड इसलिए मैंने बोला इट्स वेरी चैलेंजिंग, नॉट सो इजी, इट्स नॉट जस्ट लाइक टिक इन द बॉक्स जॉब। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसके जो कि बहुत अलग है एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग हैं, यस अलग यस अलग यस। कंट्री, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग जॉब रोल्स आई वुड से also ना, so they have got different set of questions. Every issue of each and every assignment or expat employee is na Pranil is different I would say, हम्म। जिसका आपको यू कैन नॉट प्रिज्यूम और अज्यूम कि ऐसा हो सकता है, शायद ध्रुव ऐसा हो सकता है, बी प्रिपेयर्ड, नो, होएगा कुछ तो होएगा, बट बी प्रिपेयर्ड कि हाँ यू कैन टेक केयर ऑफ द डैमेज दैट्स इम्पोर्टेंट। and be open to the feedback that you're getting so that हम्म। you can improve yourself for, and you do not commit the same mistake for the next assignment that would become like repeated offender, same चीज तुम किए जा रहे हो, that is not acceptable. राइट। तो आपका आपका कैसा एक्सपीरियंस है, और मे बी सिचुएशंस होती है व्हेन यू मे बी ऑन बोर्ड an employee in your organization, deploy हम्म them on a client's role, okay? तो टैक्सेशन पर्टिकुलरली ये जो टाइप है, जैसे आपने बोला पहले कि 50-50% भी हम्म। कभी लोगों का सैलरी यहाँ और वहाँ पे आता है। तो कैसे आप हैंडल करते हो ये प्रोसेस? कितनी कॉम्प्लेक्स है और कितना इम्पोर्टेंट है ये एक ब्रांड के लिए जो ग्लोबल जाना चाहता है, टू अंडरस्टैंड लाइक हम्म। वन सिंगल पिन कहीं से आती है, देन उनके शेयर प्राइस गिर जाएंगे, उनका गुडविल में प्रॉब्लम आ जाएगा, स्टेक होल्डर्स में सीन हो करेक्ट। जाएगा। सो हाउ क्रिटिकल इट इज टू डिफाइन ऑल दिस प्रोसेस? I would say absolutely critical, just like you mentioned, na, regarding the goodwill. हम्म। Companies, policy, companies, employee satisfaction part हम्म। is very much important for any client. हम्म। I would say because for the client that I have been serving to हम्म। is something they are trying to capture India market, हम्म। to be honest. हम्म। And that is why it's very important for them. They are already very established in Europe. But हम्म। India market में, Asia Pacific में, they are not that good. उसके हम्म। बहुत सारे competitors already है जो कि well established है in the market. So they are trying to set up a good business, factory maybe in India itself, and get some good market for the business. That's why it's very important, because if the goodwill is not there, if the service is not there, Pranil, they won't be able to convince or even ask their employees to come down to India to work for. हम्म। That is first thing. That is very important. उसका dissatisfaction आएगा, doesn't matter, वो कंपनी छोड़ देगा शायद। और ये राइट। सारे लोग इतने हाई लेवल पे हैं, they're like executive levels, हम्म। MDED levels पे, तो you can't even cross question anything that you feel like कि एक बार पूछ लेता हूँ, that is not good. वो राइट। बोलता है ना, आप हाँ में हाँ बोल के निकल लो वहां से, then you come back, come to your client, ask हम्म। them, is this question even relevant? Can राइट। we entertain? Can we help them with the ask that they have requested for? Suppose a simple example that I've shared regarding the school fees, हम्म। that is not even there in the budget for that particular assignment. But because it's a high level employee, executive level, and he has requested, and the job role is very important for that particular person, for that business, कि they have agreed to do the exception, और वो हम्म। approval आया, and he got it approved not just for his kids ka school fees but also some other benefit that he has requested हम्म। and has been approved by the business. So yes, it's very much important. And regarding the tax part, if I have to answer to you that question, tax is also equally important because that decides the components that gets deducted from the home or host salary structure, right? अगर वो ठीक से उसको समझाया नहीं गया, and it's a very common issue that we have seen that the employee is coming back asking for the structure or the salary that they have received. Suppose इस महीने उसको मिला था $10,000, हम्म। उसके पहले वाले मंथ में मिला था उसको $12,000. सो ही हम्म। इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्यों ये 2,000 का डिफरेंस. If he's not able to understand the tax deduction and the components, he won't be able to understand if it's the correct salary that has been credited to him. उसको वहीं राइट। पे ambiguity और शक पैदा हो जाएगा कि people who are हम्म। working for me, stating they are the consultants for my assignments, they are not competent enough, not well equipped to answer my question. This is the basic question anyone would ask because he is हम्म। staying abroad in a international foreign country जहाँ पे उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सैलरी है, to run his राइट। family,
make the expenses, school, kids, everything. Hmm. Rent pe chal raha hai and all those stuff. So yeah, tax is equally important. That tax engine, what we have also seen, to be honest with you, Pranil, is कभी-कभी tax engine comes incorrect. शायद इवैल्यूएशन में गलत हो गया हो because it's not us who are doing the evaluation or Hmm. doing the briefing for the tax, but it's the vendor. So suppose मैंने आप सपोज मेरा वेंडर हो, मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया Hmm. ना, Hmm. तो आप गलत ही इवैल्यूएशन करोगे ना ब्रीफिंग में. Yes. 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 So it's equally important for us, for the vendor, to be in sync, to do the correct briefing for home and host location for that particular employee, and create the engine so that it comes absolutely, foolproof, no errors, so that we can use it. ओके, बट अभी है ना एकदम बेसिक सा सवाल है मेरा इसमें. 50% उसके यूएस में उसका जो अकाउंट है वहां पे यूएसडी में करेक्ट. सैलरी हाँ. आ रहा है, इंडिया में आईएनआर में आ रहा है, इफ आई एम सेइंग इट हाँ. करेक्ट, या हाँ. ऐसे होता है कि जो टैक्सेशन है आप वो यूएसडी में ही कैलकुलेट करोगे और उसके बाद वो डिप्लॉयमेंट होगा, कैसे कैसे होता है ये? अच्छा वो, सो इसका कैलकुलेशन होएगा जहां तक मेरे को पता, बिकॉज वी डोंट डू, एज आई ऑलवेज से, वी डोंट हम्म. डू द टैक्सेशन पार्ट, इट्स द हम्म. वेंडर. हाँ. बट it gets calculated for home and host both location based हम्म. on the currency rate उस हिसाब हाँ. से. तो उस हिसाब से इंडिया का जो कैलकुलेशन आएगा, इंडिया के हिसाब से वो स्प्लिट में जाएगा आईएनआर में, और एक स्प्लिट जाएगा यूएसडी में. हम्म. सपोज 10,000 का दो स्प्लिट मारा ना, तो एक स्प्लिट जाएगा यूएसडी में और एक स्प्लिट हम्म. जाएगा उस पे आईएनआर में. हम्म. बेस्ड ऑन द करेंसी एट दैट पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर मंथ, it gets calculated. But I'm not too sure about the exact whole calculation for the taxation because we are not doing it from our end. It's राइट the राइट vendor. राइट. We're just using that particular tool or the engine. हम्म. Yeah. बट एज यू सेड कि आपका रोल रियली नीश है, और बहुत कम हम्म. कंपनीज में ये पर्टिकुलर रोल भी मैंने देखा हुआ है. करेक्ट. सो ग्लोबल मोबिलिटी बहुत कम है. एग्जैक्टली, इवन रादर और अभी तो सिचुएशन के हिसाब से प्रणिल, आई थिंक ये बंद भी कर देंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हम्म. जो वॉर सिचुएशन, जो मार्केट का सिचुएशन हम्म. है, एवरीवन इज प्लानिंग कि अपन असाइनमेंट में, छोटे छोटे असाइनमेंट में 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने के लिए भेजेंगे नहीं. बंदे को भेजेंगे तो परमानेंटली भेज देंगे, तू भाई वहां पे जा, वहीं पे काम कर, ओ. वहीं से काम कर. हमारे पैसे भी बचेंगे, कंपनी अपना प्रॉफिट भी सोचेगा. हर राइट. महीने तुमको क्यों दे. या फिर तुमको एक लमसम अमाउंट दे देते हैं, मेरे को 10 चीज अलग अलग देनी नहीं पड़ेगी, मैं तुमको $10,000 दे दूंगा, उससे तुम अपना सब कुछ निकाल लो. हम्म. मैं तुमको अलग अलग 10 चीज के लिए दो दो हजार करके दे रहा हूँ, हो जा रहा है ना 20,000. तो मेरा आधे में निपट जा रही है, तो तुम देख एब्सोल्युटली. लो. हाँ, तुम क्लेम करो विथ योर रिसीट्स. वी आर हियर टू हेल्प यू विद द रीइंबर्समेंट. हम्म. बट तुम अपना देख लो जो तुमको फीजिबल लगे, सुइटेबल लगे, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट अलग है, राइट. रिक्वायरमेंट अलग है, तो अपने हिसाब से बिठा लो. एंड वी विल हेल्प यू विद द फंड्स टू बी ओके. रीइंबर्स्ड. ओके. अभी आप इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत सालों से काम कर रहे हम्म. हो, यू हैव लाइक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन दैट. मुझे अगर रिक्रूट अलग अलग कंट्रीज में ले जाना है, ओके, हम्म. तो बेसिक से मुझे कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? लाइक ओके, हायरिंग तो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, मैन पावर, इनके हर हर कंट्रीज के अलग अलग रूल्स होंगे कि इतने वही है. लोकलाइज चाहिए, इतने आप बाहर से ला सकते हो क्रिटिकल स्किल सेट में. दैट्स वही है. फाइन, दैट्स फाइन. बट व्हाट डू यू सजेस्ट कि जैसे आपने बोला कि वहां पे अभी लोगों को भेज दो और परमानेंटली ही डिप्लॉय कर दो, दैट इज अ गुड हम्म. थिंग, या फिर एज अ स्टार्टअप और एज अ एसएमई कैसे इंडियन कंपनीज बाहर जा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं? सो सपोज कि आपका रिक्रूट अभी यहाँ पे, एंड यू आर हम्म. प्लानिंग टू सेट अप another branch or another office in a different country, suppose in हम्म. US. हम्म. सो उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा वहां का मार्केट कैसा है. हम्म. राइट, सबसे पहला चीज है कि वहां पे मार्केट कैसा है. इट वुड बी अ न्यू स्पेस, अ न्यू प्लेस फॉर यू टू सेट अप द बिजनेस. राइट. उसके लिए आपको हर चीज अच्छी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर उसका आउटपुट बेकार जाएगा. सो फॉर हम्म. दैट, आई थिंक, और व्हाट कंपनी थिंक्स इज कि skilled people should be taken from इंडिया. प्रणिल जो ऑलरेडी जानता है चीज, सपोज कि प्रणिल का दोस्त है हम्म. ABCD, जो कि इंडिया में है, लेकिन प्रणिल डज नॉट हैव एनी स्किल्ड एम्प्लॉय इन यूएस, जो कि एक हम्म. नया साइड भी है. तो व्हाट दे डू इज, इंडिया से लोग उठा के स्टार्टिंग में वहां पे लेके जा रहे हैं. दैट इज लाइक द असाइनमेंट फॉर, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेटअप करना है.
और उसी बंदे को लेके जाएंगे जिसके पास स्किल है। इसीलिए हम्म। कंपनी इज रेडी टू नेगोशिएट ऑन ईच एंड एवरी बेनिफिट। जो प्रोसेस है उसको भी वो तोड़ मरोड़ के बेनिफिट्स दे रहे हैं, राइट। एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव, एज पर द कंपनी, सॉरी, एज पर द एम्प्लॉयज रिक्वायरमेंट, ओ। because they know how important these people are for that particular location, for that particular role, at least for the next 3 to 5 years। ये मुझे वहां पे चाहिए। जैसे ही ये हम्म। काम सेटअप हो गया, प्रणील के 4 लोग गए जो स्किल्ड है, सब कुछ सेटअप किए, वहां पे 40 लोग बना चुके हैं, देन यू कैन डिपेंड ऑन देम, कि वहां से कम से कम मैं 10 लोगों पे तो भरोसा कर सकता हूँ, टू गेट अनदर 20 और 30 और पीपल एंड एक्सपैंड द हम्म। बिजनेस। तब आप जाके ऐसा कर सकते हो कि इसका, इसलिए ये ग्लोबल मोबिलिटी में ना प्रणल एक और चीज है, एक्सटेंशन। जो हाँ। असाइनमेंट पे गए, प्रणील हैज गॉन फॉर 3 इयर्स, काम खत्म नहीं हुआ। सपोज इन दिस क्लासिक केस सिनारियो ओनली, प्रणील को वहां पे और 2-3 साल रुकना पड़ेगा शायद। हम्म। काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा है, वी हम्म। नीड मोर सपोर्ट। तो इसी का एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन करेंगे, सैलरी भी बढ़ेगा, बेनिफिट्स भी आएंगे, ओ। और एक्सटेंशन होएगा एक एक साल करके। प्रणील वहां पे रुका, सब कुछ काम खत्म हुआ, फिर इज बैक टू हियर, और प्रणील कैन टेक अ कॉल, जैसे कि लोकलाइजेशन एक प्रोसेस है, हम्म। तो प्रणील वहीं पे लोकलाइज हो सकता है, यूएस में ही। हाँ। आपको नहीं ऐसे हाँ। लगता कि कोई एम्प्लॉय आपका यहाँ से वहां जा रहा है, obviously he'll network with your clients, with different companies and he'll maybe switch there हम्म। only. तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली। आपको क्या प्रॉब्लम होता है एज एन ऑर्गेनाइजेशन? हाउ डू यू देन ट्रांसफर द पीपल्स और मे बी होल्ड दैट एम्प्लॉय बैक, you know this is bound to happen, like you are working with us? इन दैट केस आई वुड से, जैसे कि आपने बोला, वहां पे जाके दे विल क्रिएट देयर ओन नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स, राइट? Yeah. दैट इज वेरी मच पॉसिबल, एंड दैट्स व्हेन दिस लोकलाइजेशन थिंग आल्सो कम्स इन पिक्चर। हम्म। कि उसको पता चल गया उस कंट्री में जाके 2-4 साल रहेगी कि अरे भाई हम्म। मेरा वैल्यू बहुत ज्यादा है, आई कैन गेट मोर कंपेयर टू द सैलरी दैट दिस कंपनी इज ऑफरिंग, आई राइट। लोकलाइज, आई फाइंड समथिंग एल्स जो कि मेरे को मार्केट में अच्छा पैसा देगा। इफ दैट इज देयर, देन आई थिंक प्रणल नो वन कैन स्टॉप दैट एम्प्लॉय, टू बी ऑनेस्ट, जहां तक राइट। मैंने देखा है। अगर आपने माइंड सेट कर लिया मेरे को जाना है, तो आप जाओगे ही। कितना भी आपको रिटेन करे, कितने दिन रिटेन करेगा, 1 साल 2 साल, उससे देन उसके ज्यादा बाद तो नहीं जाएगा, होगा। राइट, बिकॉज राइट, राइट। ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ लिमिट ऑल्सो फॉर ईच एंड एवरी रोल, फॉर ईच एंड हम्म। एवरी पर्सन ऑल्सो, फॉर अ कंपनी ऑल्सो टू रीच टू एक्सपैंड देयर थ्रेश होल्ड ऑफ सैलरी हम्म। एंड बेनिफिट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद वो जाएगा। सो दैट्स ओके, दैट्स हाउ दे हैव प्लान दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि एक जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने को ऐसे एक की जगह 3 और बना लेना चाहिए। हाँ। डिपेंडेंसी एक पे नहीं रहेगा। राइट, राइट, So राइट। that's how they have planned, that's how they have calculated everything। जैसे कि एक बंदा हर एक चीज अगर करेगा, तो वो हो गया फंजिबल बंदा। तो प्रणील के जैसे मेरे को और 4 बनाने हैं, प्रणील से ही सिखवाऊंगा मैं, हम्म। प्रणील ही सिखाएगा। हम्म। लेकिन प्रणील पे एक टाइम के बाद पूरा डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। क्या दैट्स अ भरोसा, गुड प्रणील को स्ट्रैटेजी। मार्केट में वैल्यू मिल रहा है, राइट? वो बाहर एब्सोल्युटली। जाएगा ही, रोक नहीं सकते। लेकिन वो 3 जो बंदे बैठे हैं, उससे मैं प्रणील का एक का काम मैं 3 बंदों में तो करा सकता हूँ। बिजनेस तो चल ही तो रहा है। वो सारी चीज, हाँ। तो वैसा वाला स्ट्रैटेजी इन लोगों ने रखा है कि हाँ भाई ऐसे कर सकते हैं, एक हाँ। जाएगा। लेकिन इनिशियली हिकअप्स जितने होते हैं हमने देखे हैं, रियल टाइम डिमांड्स आते हैं, कंपनी को मानना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द गुडविल, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज उसको हम्म। पता है कि इसको अगर मैं 20 25 30% हाइक दूंगा, मेरे वर्ल्ड मार्केट में जितना कमाई होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इट्स हम्म। इट्स अ रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट जस्ट वन कंट्री। सपोज हम्म। यूरोप में एक्सपैंड करना है, यूरोप में एक कंट्री नहीं है, भर के कंट्रीज है। अब कौन से कंट्री में आप एक्सपैंड करोगे, क्लिक हो गया, इसकी सैलरी आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा शायद। राइट, राइट, राइट। और एक एक प्लांट के लिए कितने ही लोग ले रहे हैं, जैसे कि अभी एक्सपैंड कर रहे हैं इंडिया प्लांट, इंडिया में एक प्लांट है, उसमें कितने लोग हैं, 10 20 50 लोग हैं, सब सेम सैलरी स्लैब में है भी नहीं वो। हम्म। एक हेड है, उसके नीचे 3 4, उसके नीचे 8 10, वैसे करके हैं। जो बाहर से आ रहा है बंदा सेटअप करने के लिए, इंडिया में प्लांट है, वो एक्सपीरियंस है, वो भर के सैलरी ले रहे हैं कंपनी से, हम्म। लेकिन नीचे के जो यहीं से ले रहे हैं। अब आईएनआर के हिसाब से सैलरी बंदे को कितना ही दे दोगे, लाख भर का दे दो। एग्जैक्टली। लेकिन वो जो आ रहा है वहां पे कम से कम करोड़ के हिसाब से ले रहा है, राइट, राइट, अगर राइट, हम राइट। लोग भी। तो डिफरेंसेस हैं, ड्रॉबैक्स है, बट they have got their own way also to dealing with, because they don't spend so much time to retain someone, which I have हम्म। seen also। तो तुम जाओ, एक हद तक तुमको रोकेंगे, उसके बाद इफ यू हैव अ वैलिड रीजन ऑल्सो ना, इफ सपोज व्हाट आई हैव ऑल्सो सीन इज, प्रणील हैज गॉट अ गुड प्रोस्पेक्ट, हिज विजन इज वेरी क्लियर। हम्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए बंदा जा रहा है,
बंदे का नॉलेज भी, और बंदा कुछ और भी कर रहा है, हम्म। जाके वहां पे कुछ बहुत सही करेगा जो यहाँ पे उसको मौका ही नहीं मिलेगा. That is also another reason that we see employees citing for अच्छा। for their exiting the company. जैसे कि हाँ। एक दो लोग वैसे भी बोल के गए कि हाँ भाई मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को इस कंपनी में नहीं मिल रहा है. डेफिनेटली देयर इज अ मनी इन्वॉल्व, बट देन यस इट्स यस। नॉट द मनी दैट आई वाज लुकिंग रोल। फॉर. रोल जो मुझे आगे जाके मेरे करियर में, मेरे रिज्यूमे में बहुत सॉलिड इम्पैक्ट करने वाला है. आई कैन हम्म। टॉक लॉट अबाउट दैट, एंड देयर कुड बी अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर डाउन द लाइन 2-3 साल बाद. तो आप तो हाँ। मुझे अभी दे नहीं पाओगे, वो तो आप मेरे लिए ला नहीं सकते. शायद आप मेरे लिए सैलरी ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो उस हिसाब से कभी कभी उसको कंपनी हैज टू लेट दैट पर्सन गो. नाइस नाइस नाइस। फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि आपका एक्सपीरियंस समझने के लिए और ये सिचुएशन समझ के कुछ उसमें अच्छा करने के लिए एज अ कंपनी ऑल्सो ना, आई हैव टू हैव वन मोर कॉन्वर्सेशन विद यू ऑफलाइन, एंड इट इट Sure. इट इट डजंट हैव टू बी अ टाइम बाउंड एज सच, बट Exactly, just like the last conversation we had, right? exactly, exactly. And having said that, I know that you have taken time out on weekends. इतना टाइम No आपने problem, no ऑडियंस के problem. लिए दिया है। This is something that we have only requested from you. Maybe during the week, during weekend, maybe afternoon time. This is the best time I think, because इसके बाद सबको थोड़ा बाहर जाने का मन करता है. It's very monotonous, and I am या। working from home for a very long time, हाँ Pranil. हाँ। So even I'm willing to go out, see some faces, new faces in my new role in the new team. हाँ If I can हाँ। get something, if not, then it's fine. जब तक चल रहा है चलते हैं. यस यस Let the यस। work start, and let's see what is the client talking about. This is a new client that I'm hoping it should go well. हम्म। Opportunity is different. Again, if you ask me down the line after 6 months, I can give you some another new experience, huh? We should have like a proper setup Or and a offline podcast actually for that, yes, you know. no But thank you problem. so much for doing this. We are really grateful. बहुत Thank you. मजा आया आपके साथ बात करके, और एक अलग चीज हम लोगों ने आज सीखी है. So thank you so much for Sure, sure. enlightening us. Thank you, Pranil. Thank you so much for the time, for the opportunity, for the session. I shall see you soon. Sure, Yeah, sure, you sure. take care. See you. Yeah, Yeah, thank you. bye bye. Bye. Bye bye. सो आई एम वेरी श्योर कि आपको ये एपिसोड देख के वही चीजें सुनने मिली होगी जो आपने कभी सुनी नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन ऐसे एचआरस के साथ शेयर करना जिनको एचआरस में अलग अलग डेजिग्नेशंस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करना है, शायद ओवरसीज काम करना है या फिर डोमेस्टिक भी काम करना है. और ये एपिसोड प्लीज लोगों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना. इस मोटिव में आपका साथ हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.